Right. So let's get into some exercises for present, simple present and present continuous tenses. So that will help us to kind of, थोड़ा practice हो जाएगा sentences में कैसे use होता है. तो sentence usage से help होती है समझने में, जितना मैं बोल के आप लोगों को नहीं समझा सकती. Right. So बेसिकली हम लोग कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस लेंगे जिसमें मैं वर्ब का सेक्शन ब्लैंक रखूंगी एंड विल फिल इट अप टुगेदर. ऑलराइट. ओके. कूल. ओके, लेट्स स्टार्ट. Marry. Mary has a little lamb या फिर Mary have a little lamb. Now ये बहुत कॉमन नर्सरी राइम है, राइट? Mary has a little lamb. क्यों क्यों Mary has and why not Mary have, right? So the reason for this is कि मैंने आपको बोला कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन अगर है, जैसे कि मैरी, शी, राइट? सो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में वर्ब के लास्ट में एस और ईएस ऐड होता है ना? बट हैव, फिर ये हैव्स क्यों नहीं है? हैव्स होना चाहिए ना, हैव के बाद ईएस ऐड होना चाहिए. बट इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सेप्शंस भरा पड़ा है, और ग्रामर में एक्सेप्शंस इज वन ऑफ स्पेशलिटीज. एक स्पेशलिटी है इंग्लिश लैंग्वेज की कि ग्रामर में एक्सेप्शंस है. सो इसलिए हैव द वर्ब हैव, उसके पास है. हैव व्हेन यूज्ड इन थर्ड पर्सन सिंगुलर इट बिकम्स हैव का पास्ट है हैड, बट हैज तब यूज होता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो. तो लेट्स लाइक गो थ्रू सम एक्सेप्शंस हियर, राइट? Let's do this. Do या does. Do कोई काम करना, do. Do का थर्ड पर्सन सिंगुलर है does. dos डॉस नहीं, does. डी डू के बाद एस या ई एस ऐड होता है जनरली थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में, तो डू के बाद ई एस ऐड होता है, सो डज. थर्ड पर्सन हुआ तो. बट यहाँ पे है आई डैश डू और डज माई जॉब वेल. आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन. तो क्या होगा? आई डू माई जॉब वेल. बट यही पे इफ आई यूज्ड अजय do या does his job well, यहाँ पे क्या होता? फिर यहाँ पे do होता या does होता? यहाँ पे do होता या does होता? यहाँ पे does होता. क्यों? क्योंकि अजय is third person singular number, so अजय does his job well, right? Good. Let's move on. Author examples. Ria
is painting, are painting a beautiful bird. Ria is painting or Ria are painting a beautiful bird. यहाँ पे क्या use होता है? Now Ria again is a third person singular noun. So if Ria is a third person singular noun, then we use is painting, not are painting, is painting. Now why is painting not are painting? Because Ria is third person singular. So this becomes Ria is painting a beautiful bird. है ना? Look at some next sentences. Arjun draw या फिर draws. Arjun draw या draws? Arjun draws. Why Arjun draws? Because Arjun is third person plural. Third person plural, simple present tense में it becomes draws. Good. So यहाँ पे verbs or tenses, these distinctions, यहाँ सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जहाँ पे एक ही जगह में थोड़ा सा डिफरेंट है इज सिंपल प्रेजेंट का थर्ड पर्सन, राइट? सिंपल प्रेजेंट का थर्ड पर्सन, बिकॉज सिंपल प्रेजेंट का थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में वर्ब के बाद एस और ई एस ऐड होता है, राइट? और इफ अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखें वहां पे सिंगुलर में ऑलवेज इज यूज होता है when it's third person singular. But अगर first person singular है और आपको present continuous tense use करना है, first person है I, तो वहां पे I is नहीं होता, I am, I के बाद am, है ना? But second person singular में second person क्या है? You. But you singular में भी है, तो you is नहीं होता, you are. So if I say you are doing great in academics, right? So you are doing, है ना? ये ऐसा नहीं होगा, it doesn't become you is doing. No, there is no you is, it's you are, है ना? Same way, I am planning a party. I am planning a party. ठीक है? It's never going to be I is planning. This is wrong. I is planning नहीं होता. It's I am, है ना? I am planning. Again, first person single, first person plural present continuous में is we are. We are planning a birthday party. We are dancing, right?
Same way, we are studying for our test, right? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए. तो हम लोग यहाँ तक इसे रखते हैं. नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू इज लाइक आई स्टार्ट विद अ बिट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि what is actually present perfect tense, right? तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो क्या होता है, पहले हम समझते हैं व्हाट इज दिस, व्हाई आर वी यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट. एक सेंटेंस में हम लोग कब प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं. तो जैसे हम लोगों को पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है इफ इन जनरल यू डू समथिंग. इन जनरल आप कोई काम कर रहे हो, राइट? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है जब वो काम अभी भी चल रहा है, कि आप अभी भी वो काम किए जा रहे हो, कि अभी भी आप खेल रहे हो, अभी भी आप नाच रहे हो, अभी भी आप ड्राइंग कर रहे हो, है ना? तब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग कहाँ यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोगों को कुछ काम किया है किसी ने, एक स्पेसिफिक टाइम को जब हम एक सेंटेंस में इंडिकेट करना चाहते हैं. तो यू हैव डन समथिंग, आपने कुछ किया है जिसका कॉन्सिक्वेंस या फिर जिसका रिजल्ट उसके बाद का इमीडिएट इफेक्ट अभी भी चल रहा हो आप पे. तो व्हाट डज दैट मीन? I have played football. I have played football. Now, at some point in time, I played football, but that consequence of play कि मैंने क्या जो जो सीखा था कि मैं अभी भी खेल सकती हूँ, all these things are still continuing. So that is what it's meant by perfect tense, present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होते हैं, है ना? सो ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, आई विल गो ओवर इन द नेक्स्ट क्लास जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को और एलैबोरेटली डिस्क्राइब करूंगी. तो अभी तक के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग तभी यूज करते हैं जब हम लोगों को कोई काम किसी एक टाइम में किया था जिसका रिजल्ट अभी भी चल रहा है, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस अभी भी वी कैन सी, वी कैन फील. Yeah, I have played football before. You know, I have played football in school. तो मैंने स्कूल में फुटबॉल खेला था, अभी भी खेल सकता हूँ. So, you know, I've had that experience. तो वैसे अगर कोई सेंटेंस है या वैसे आपको कुछ बताना है, so you want to express that in sentence, you use present perfect tense, right? So, इधर भी there are the same differences and forms that you have to use. So first person, second person, third person, singular and plural. But यहाँ पे what is it? Sentence का structure कैसा होता है? So if I go about sentence structure, for simple present tense का अगर हम लोग sentence structure देखें तो क्या simple present tense का क्या structure है? एक subject, right? You need one subject. Yeah, that is I, he, she, it, you, we, they, right? Subject plus the verb plus a predicate if you want to. Anna, but for present continuous tense में क्या है? You have to add am, are, is to your verb and add an ing after the verb. है ना? Playing, am playing, is playing, are playing, am dancing, is dancing or dancing, is making, are making, am making. Perfect present perfect tense में क्या होता है? Before the verb we use have or has depending upon singular subject है या plural subject है. और जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम लोग जो वर्ब यूज करते हैं इट्स नॉट द सेम. कैसे? हम वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है? सो
लास्ट क्लास में आप लोगों ने मुझे बताया था कि आप लोगों ने किया है दिस पार्टिसिपल थिंग, सो मैं थोड़ा सा आपको जस्ट दे रही हूँ. फॉर्म्स ऑफ वर्ब, राइट? प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ये बहुत कॉमनली यूज होता है. सो व्हाट इज दिस पार्टिसिपल फॉर्म? ये पार्टिसिपल फॉर्म वही सेम चीज है कि यू हैव डन एन एक्शन बट दैट कॉन्सिक्वेंसेस इज स्टिल बीइंग फेल्ट. You know that consequences you can feel, you can see that result is still continuing. So जैसे do का, right? Do is the present tense. Past का do का past क्या है? Do did, है ना? I did it, did. और participle is done. Okay. Again, another example if I give is, for example, कभी कभार वर्ब फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में ना पार्टिसिपल में चेंजेस नहीं आते. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, प्रेजेंट भी प्ले, पास्ट इज प्लेड, एंड पास्ट पार्टिसिपल इज आल्सो प्लेड. बट गो, if the verb is go, present is go, the past is went, and participle is gone, है ना? So these are जब perfect tense है, when it's present perfect tense, we add have or has before the verb, और verb का form जो use होता है उधर पे, that is participle form, right? So if I kind of elaborate, I have played, or I have gone to, I've gone to a restaurant. I have gone. Yeah, मैं गई थी restaurant में at some point, but the consequence of it is still being felt. है ना? So this is what, at its very basis, present perfect tense, how does it work in sentences? I have played football. I have danced to this music. या फिर I have done my homework, like that. But if there is a third person singular, then it becomes he has played in the Indian cricket team. Yeah, he has done his homework, or he has completed his work, like that. So next class we'll go over these forms of verbs, that is present, past, and participle, and we'll go over present perfect tense and present perfect continuous. So that brings us to the end of today's lesson on tenses.